Bismillahirrahmanirrahim. This is a lecture for Monday, 7th December 2020. This is going to be the lecture related to Unit 87 and 88 for Oxford Practice Grammar. This is going to account for 1 credit hour. So Unit 87 discusses the use of the in different situations. If you have your book open in front of you, that will be a good idea because you can see that the writing on the screen is quite small. So if your book will be in front of you, you will have a better idea. So prison or the prison. Compare these situations. Now you can see this man sitting in two situations here, but you can see that this man is sitting in a prison. Here he is sitting alone, and here he is sitting here talking to someone, a lady, and the policeman is sitting in the background. Now these are two different situations. Let's look at them. First, let's look at the first picture here. What is written underneath the first picture? This man is in prison. He went to prison 2 years ago. This man is in prison. He went to prison 2 years ago. We do not use the when we are talking about being in prison as a prisoner. Now look at the second picture. The young woman is in the prison. She has gone to the prison to visit her father. We use the when we mean the prison as a specific building. The young woman is in the prison as a visitor. Now, if you pay attention, I discussed in the previous unit when we started doing the indefinite articles a and and the definite article the. I told you a very clear point, and that is that the is used before the nouns where you want to talk about something that is demanding attention. In different situations, the attention or the focus of the discussion changes. Sometimes you are talking about the person involved in the action, and at the other time you are talking about the place, and then some other time you are talking about the time. So, in the context, different things are involved that demand our attention in a different way. Sometimes we are talking about the people, sometimes we are talking about the places, sometimes we are just referring to the time, sometimes we are referring to the situation in which we are in, sometimes we refer to a very specific point in a complete discussion. The point here is that the is definitive article. It means that it is used before the nouns where you want to stress something. Now, in these two pictures, you can see that the situation is quite different. The man is in prison. He went to prison 2 years ago. So, when we are talking about the man, what the man is doing, what his actions are. So the point of focus here is the man, not the prison where he is. अगर आप मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको समझ भी आ जाएगी कि यहाँ हमारा फोकस वो आदमी है जो कि एक्शन कर रहा है, वो जगह नहीं है जहाँ पर ये एक्शन हो रहा है. यानी कि हम ज़्यादा बात फर्स्ट पिक्चर में हम आदमी के बारे में ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट, जबकि दूसरी पिक्चर में हम प्रेजेंट के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं. बिकॉज वी लेट से हम इस सिचुएशन को रिवर्स करते हैं. लेट अस आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द मैन डूइंग? व्हाट इज द मैन डूइंग? आदमी क्या कर रहा है? ही इज इन प्रिजन. ठीक है. उसके बाद हम पूछेंगे वेयर इज द young woman going? We will say the prison. So here in the reverse situation, if you ask the question first, तो फिर यहाँ आपको बात समझ आ जाएगी कि यहाँ कहने का क्या मतलब है. यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन आदमी है और इस पिक्चर में पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो जगह है जहाँ पर वो लड़की गई है. So here are some examples with other buildings.
School is over at 3:30. So we are talking about school activities here. स्कूल कितने बजे खत्म हो जाता है? 3:30 पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज हैं वो हम उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम स्कूल कहाँ है, कैसा स्कूल है, उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे। विकी इज एट कॉलेज। विकी क्या करती है? विकी कॉलेज में है। शी इज अ स्टूडेंट देयर। यहाँ पर हम कॉलेज के बारे में नहीं पूछना चाह रहे, हम विकी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। डेविड इज इन हॉस्पिटल। ही इज अ पेशेंट। डेविड कहाँ है? डेविड कैसा है? सो वी वांट टू नो अबाउट डेविड, वी डोंट वांट टू नो अबाउट द हॉस्पिटल, सो दैट इज व्हाई वी आर referring to David that he is in the hospital. Melanie is going to church. She is going to a service. Melanie कहाँ जा रही है? ठीक है। So you can see in this question जिस पर मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस देकर कहा मेलेनी पर कि मेलेनी कहाँ जा रही है? Where is Melanie going? So the place where she is going, that is not quite important here in this situation. According to this situation, जब हम मेलेनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसकी एक्टिविटी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो फिर हम पूछेंगे मेलेनी कहाँ जा रही है। तो इस सिचुएशन में चर्च से पहले द नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रही हैं कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड चर्च, यहाँ अगर आप देखें तो किसी से भी पहले द नहीं लगा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जगह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनके बारे में बात की जा रही है, जो इंसान है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड पिक्चर के रेफरेंस के हिसाब से लेट्स लुक एट द अदर एग्जांपल्स। द स्कूल इज अ माइल फ्रॉम हियर। द स्कूल बिल्डिंग। Now, if we are talking about the school, if we are inquiring about the school, that where is the school? ठीक है, या how far is the school from my home? तो फिर school is a mile from here. School building के बारे में बात हो रही है, इसीलिए the school. Now, if we are talking about some specific school और हम उसी स्कूल के बारे में बात करें, हम ये नहीं पूछ रहे स्कूल के अंदर क्या होता है, स्कूल के अंदर क्या एक्टिविटीज है, नो। Here our focus is the school, इसीलिए यहाँ से पहले the लगा। The meeting was at the college. Now imagine कि इससे पहले सवाल पूछा गया है where was the meeting held? So the meeting was at the college. Here you can see that the is used. Melanie waited in the hospital for news. अब इससे पहले भी अगर हम सवाल पूछें where did Melanie wait for the news, तो उसका जवाब ऑटोमेटिकली बनता है Melanie waited in the hospital for news. We wanted to look around the church, but it was locked. Where did you want to look around? We wanted to look around the church. अब यहाँ पर आप देखें कि the school, the college, the hospital, the church, इन सब के अंदर ये वो buildings हैं जिनके बारे में हम बात करना important समझ रहे हैं, इसीलिए इनसे पहले हमने the लगाया. We can also use jail and university in this way, but we do not leave out the before other nouns for buildings. For example, the cinema, the factory, the house, the library, the office, the pub, the shop, the station. सो हम जेल और यूनिवर्सिटी को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। जो इसके अंदर से आपने चीज सीखनी है वो ये है कि जिस भी सिचुएशन में आप किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अब आप देखें एक सिचुएशन को इमेजिन करें कि एक सीन है, लेट्स से एक मूवी का सीन है, या आपके सामने ये जो दोनों पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये दोनों इमेजिन कर लें मूवी का सीन है। अब इस सीन के अंदर जो फोकस है वो ये आदमी है कि वो ये आदमी क्या कर रहा है, वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, उसकी क्या सोचें चल रही हैं। इस सीन के अंदर जो है ना वो फोकस जो है वो जगह है, लेकिन आप देखें कि इस सीन को हर एक चीज मिलके बनाती है। फॉर एग्जांपल, इस सीन के अंदर एक आदमी भी मौजूद है, फिर इसके अंदर सेटिंग एक प्रिजन की मौजूद है, फिर इसके अंदर दूसरे लोग भी मौजूद हैं, द पुलिसमैन, द वुमन, फिर उसके बाद जो उनके दरमियान बात हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप उनके दरमियान के होने वाली बात के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उससे पहले लगा सकते हैं द कॉन्वर्सेशन दैट दे हैड। अगर आप इस टेबल के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं, द टेबल दैट दे वर सिटिंग अक्रॉस इन द प्रिजन। अगर आप इस खिड़की के बारे में बात करना चाह रहे हैं, द विंडो थ्रू विच द मैन कुड सी, ठीक है। तो इसका मकसद आपको बताने का ये है कि एक सिचुएशन में डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में आप खास तौर पर बात करना चाह रहे हैं, ज्यादातर आप द उसी से पहले लगाते हैं। बी, बेड, होम, एटसेट्रा।
Here are some phrases with other nouns. Bed. In bed, go to bed. To rest or sleep. फिर home, at home, go home, come home, leave home. Sea, at sea, sailing, go to sea as a sailor. Uh, Town, in town, go into town, leave town. Work, at work, go to work, leave work. But sit on the bed, make the bed. अब इसके अंदर मुख्तलिफ आपको पता है फ्रेजेस के अंदर जब हम prepositions यूज करते हैं तो कई बार उस पूरे के पूरे फ्रेज के माने बदल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है होम के साथ एट होम अगर कोई आपके घर मेहमान आता है जिसको आप एज सच मेहमान नहीं समझते वो थोड़ा सा फॉर्मल हो रहा है समटाइम्स यू आस्क सच पीपल प्लीज फील एट होम When you tell them to feel at home, it means कि आप ये नहीं कह रहे हैं कि उनको प्लीज आप ये फील करें आप अपने घर में मौजूद हैं एक तरीके से ये भी कह रहे होते हैं लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है वो ये प्लीज फील एट होम मीन्स प्लीज बी कंफर्टेबल या प्लीज डोंट बी फॉर्मल तो ये जो prepositions हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसके आने से पूरे के पूरे फ्रेज का मीनिंग भी चेंज हो जाता है सिट ऑन द बेड मेक द बेड अब देखें ऑन द बेड बेड पर बैठ जाओ इन बेड यानी कि लेटा हुआ हूँ या लेटी हुई हूँ गो टू बेड अब तुम्हें सो जाना चाहिए गो टू बेड का मतलब क्या है ये नहीं है कि बेड के पास जाके खड़े हो जाओ गो टू बेड मीन्स कि अब जाकर सो जाओ मेक द बेड यानी कि अपने बिस्तर की चादरों की सिलवटें दुरुस्त करें तो ये जो आर्टिकल है द और उससे पहले लगने वाले जो prepositions हैं उससे कई बार जो उस पूरे फ्रेज के माने हैं वो बदल जाते हैं So let's look at the exercises now. I will tell you which exercise is for homework. Exercise 3 for Unit 87 is your homework. And question number 1 and 2, we are going to do this together. So question number 1, prison or the prison. So put in brackets put in the words in brackets. Decide if you need the. So here you have to decide if you need to put the before the words given in the brackets or not. So an exemplary statement has been done here. The 4 members of the gang were sent to prison. Their wives drove together to the prison every week to visit their husbands. 4 members of the gang कहाँ भेजे गए prison भेजे गए कौन prison भेजा गया 4 members. So here the 4 members talking about the 4 members is much more important than talking about the prison. But then in the second sentence, their wives drove together to the prison. So here we are talking about the prison. So let's do number 1. Not many people go to dash church regularly nowadays. So they are talking generally here, like we discussed in the rules in the previous unit. In the previous units, unit 83 and 84, where we discussed that the article the is the definite article and it is sometimes used to talk about something specific that you are referring to. So not many people go to church regularly nowadays. So here they are talking about the church in the general sense. So here we are going to use church without any the. I saw some tourists walking to the church last week, but they only wanted to take photos of it. So here in the second sentence of number 1, they are referring to a specific church. So that is why you are going to use the church here. I'm not writing here on the space because the space is quite small here. So please bear with me. If you will listen to me carefully, then you can pause this video or you can, rewind it just to listen to it again. Number 2, a group of people came out of Dash Cinema, crossed the road and went into Dash Pub. A group of people came out of the cinema. Where did the group of people come from? They came out of the cinema. So here we are going to use the before cinema. Crossed the road and went into, so they went into a specific place. So here we are going to use the pub. Number 3, when my father was ill and had to go to Dash, my sister went with him in the ambulance.
She's a doctor and she works at dash. So when my father was ill and had to go to hospital, you are not going to use any article before the first hospital. And then in the second sentence, she's a doctor and she works at the hospital. So where does your sister work? She works at the hospital. Mark has always known what he wanted to do in life. After leaving Dash school, he took a course in business studies at Dash College. So in both these blanks in number 4, you are not going to use any article. The words are going to be used as they are. After leaving school, he took a course in business studies at college. Exercise number 2. Complete this paragraph from a magazine article from Melissa Livingstone. Put in the words with or without the. Today, Melissa Livingstone is a popular actress and star of the TV soap opera Round the Corner. But as a child, she was very unhappy. She didn't do well at school and she never went to college. So, we are not going to use any article here, simply college. Her greatest pleasure was going to dash cinema. So, in blank number 2, we are going to use the cinema. Her family lived in an unattractive town and their home was next to the station. So, in the cinema and the station, they are talking about a specific cinema and a specific station. Melissa's father, Tom, was a sailor and he spent months at sea. So, at the sea, we are not going to use. Why? Because if his occupation is already mentioned there, was a sailor, so we are not going to use any the before sea. So, sea simply is going to be without any definite article. Okay, he was hardly ever at dash uh, when he was, he didn't do very much. He was hardly ever at home. At home here means कि वो घर पर मुश्किल से होता था. यहाँ पर at home comfortable वाला नहीं है. So like I said, according to the context and the situation, the meaning of the phrase changes as well. Sometimes he spent all day in bed. So here again we are not going to use any article. Melissa's mother Susan had to get up at 5 o'clock every day to go to work. So here again we are not going to use any article because no specific work is mentioned here. When Tom lost his job, he stole a gold cup from the church. So here we are going to use the church. Susan used to go to. So read this sentence again. When Tom lost his job, he stole a gold cup from the church Susan used to go to. Now Susan went to a church and they are referring to that specific church. So that is why we are going to use the here. He had to go to Dash for a year. Prison for a year. So what did he do? He had to go to prison. Now here the point of focus is what happened to that person who committed the crime of theft. जिसने चोरी की उसके साथ क्या हुआ ये important नहीं है कि उसको कहाँ भेजा गया. So यहाँ prison बगैर किसी article के आएगा. Melissa's mother was horrified at the shame he had brought on the family. And like I said, exercise number 3 is your homework. So for Unit 88 on Friday for lunch, etc., we are going to discuss different situations. Now let me tell you that it is after all language. In language, there cannot be quite hard and fast rules. आपको rules यहाँ पढ़ाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ पर अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि हर सिचुएशन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है. एक बुक इस तरीके से लिमिटाइज्ड है कि वो आपको मोस्ट कॉमन सिचुएशंस के बारे में बता देगी कि मोस्ट कॉमन सिचुएशंस में आप आर्टिकल द कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते. लेकिन जो बाकी सिचुएशंस हैं, अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो उसमें इतना ज़्यादा बुक आपको हेल्प नहीं कर सकती. हाँ, अगर आपको उस लैंग्वेज से एक्सपोजर मिल रहा है और आप उस लैंग्वेज से एक्सपोजर में एक अच्छा टाइम गुजार रहे हैं तो फिर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा
कि किस सिचुएशन में कौन से वर्ड से पहले आर्टिकल ए, एन और द यूज करना है या नहीं करना। ए और एन के बारे में खैर काफ़ी आपको कॉमन से रूल्स बता दिए गए हैं और वो तो एप्लीकेबल होते हैं। द ऐसा आर्टिकल है जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर आप मेरी यही बात याद रख लें कि द जो है ना, आप जिस चीज़ को, जिस बात को इन्हांस करना चाह रहे हैं, जिस नाउन को इन्हांस करना चाह रहे हैं, उसी नाउन से पहले अगर आप द लगा देते हैं तो उससे आपका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। सो इंट्रोडक्शन। Henry says, "Don't forget we are meeting on Friday for lunch." Sarah says, "Of course, I haven't forgotten, but remind me where we are eating." Now इधर रुकते हैं और यहाँ पर पहले इन दोनों हम सेंटेंसेस को देखते हैं। हेनरी कह रहा है तुमने भूलना नहीं है, लंच फ्राइडे को हमारी लंच पे जो है वो हमने मिलना है एक दूसरे से। सारा कह रही है मुझे भूला नहीं है, लेकिन मुझे ये भूल गया कि हम कहाँ लंच कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि कहाँ वाला जो है ना वो इम्पोर्टेंट है और जिस फ्राइडे पर लंच करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। द रिवर साइड रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर आप देखें द रिवर साइड रेस्टोरेंट, इट इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, उससे पहले द लगा। You've been there before. Claire was with us. तुम वहां पहले जा चुकी हो, क्लेयर हमारे साथ ही थी। It was the Friday before she went to Australia. अब यहाँ पर the Friday पर आप रुकें, ये पिछले फ्राइडे, उस वाले फ्राइडे का रेफरेंस है, एक खास फ्राइडे का रेफरेंस है। Now this reference is not for every Friday. This Friday has a specific reference और वो क्या है? क्लेयर के हिसाब से है कि क्लेयर जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई, तो उसके जाने से पहले वाला जो फ्राइडे था उस फ्राइडे पर हम इस रेस्टोरेंट में गए थे। वी हैड अ गुड लंच। अब आप यहाँ देखें कि ये टाइम का रेफरेंस है, इधर बात कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम का रेफरेंस है। तो वही चीज जो मैंने आपको यूनिट 87 में बताई थी कि एक सिचुएशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सिचुएशन को मिलकर बनाते हैं। उन एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, या चलें दो के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं, तो फिर आप द यूज करते हैं। So phrases of time are usually without a, an or the. We are meeting on Friday for lunch. So time से related आपके जो normally, अगर आप obviously आप बता तो रहे हैं, अगर आप randomly कहते हैं we are meeting for lunch, तो फिर आपसे कोई पूछेगा when, ठीक है, या फिर which day। obviously lunch का टाइम तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस दिन का लंच, आज का लंच, कल का लंच, परसों का लंच, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी डे का रेफरेंस है। सो फ्रेजेस ऑफ टाइम आर यूजुअली विदाउट ए, एन और द। तो नॉर्मली टाइम के रेफरेंस से पहले इनमें से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, but we use a, an or the if there is a phrase or clause after Friday or lunch, etc. It was the Friday before she went to Australia. तो वो आपको जरा कॉम्प्लिकेटेड करके बात बता रहा है और वो कह रहा है कि अगर जो है ना वो फ्राइडे या लंच के बाद कोई अगर फ्रेज या क्लॉज आए तो आप फ्राइडे या लंच या एक्सेट्रा कोई भी इस तरह के टाइम रेफरेंस से पहले द लगाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रही हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक जो है वो दिन की, स्पेसिफिक टाइम की, स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हो तो फिर आप उससे पहले द लगा देते हैं। We normally use a, an or the if there is an adjective. We had a good lunch. Now we have discussed this already in the nouns category. हम noun की वो जो countable, uncountable है उसमें भी हम ये discuss कर चुके हैं और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से explain कर चुकी हूँ। अगर आप भूल गए हैं तो आप पिछले lectures को निकाल कर उसको फिर से सुन सकते हैं। Years, seasons and months. I was born in 1974. Now see, ये year है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। We play cricket in summer in the summer. So we play cricket in summer in the summer. अब किसी खास समर के बारे में भी बात हो सकती है या फिर एक यूजुअल एक्टिविटी है जो चल रही है, समर में हमेशा होती है, तो आप उसके रेफरेंस से भी बात कर रहे हैं। Winter always depresses me.
अब विंटर जनरली एक मौसम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, सीजन के बारे में बात हो रही है। तो जनरल सेंस में बात होने का मतलब क्या है, उससे किसी खास विंटर की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें द विंटर ऑफ 2019 या 2020 या 2018, दे ऑलवेज डिप्रेसेस मी, ठीक है। सो इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक विंटर. But if you are talking about the winter in the general sense, then yeah, you are not going to use the before it. I start the course in September. Again, the is not used before the names of the days or months until or unless you are referring to a specific month or a day. Like we discussed in the previous example, it was the Friday before she went to Australia. So the specific Friday. That was the year I was born. Now here again in section B, they have told you that was the year I was born. Let's imagine कि कोई खास इवेंट हिस्ट्री के बारे में उसके बारे में बात हो रही है और आपको बताया जा रहा है कि उस साल ये इवेंट हुआ था, तो आप आगे से कहें that was the year I was born. ये तो वही साल था जिसमें मैं पैदा भी हुई थी. It was the winter of 1995 when things started to go wrong for the company. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया the winter of 2018 always depresses me, तो इस तरह से खास रेफरेंस दें तो फिर आप the यूज कर सकती हैं. Special times, we go away at Christmas. Easter is early this year. I'll be home for Thanksgiving. We had a wonderful Christmas. I started work here the Easter before last. पिछले ईस्टर से जो है ना, पहले के ईस्टर से मैंने यहाँ पहले से काम शुरू कर दिया. Days of the week, yes, Thursday will be convenient. I'll see you on Tuesday evening. The storm was on the Thursday of that week. We went surfing at the weekend. Parts of the day and night. I can't sleep at night. I prefer to travel by day, by night. I must go to bed before midnight. We were on the beach at sunset. I hope to get there before dark. It's warmer in or during the day. Someone got up in or during the night. We are meeting in the morning. They arrived at the hotel in the evening. It was a beautiful sunset. I couldn't see in the dark. Meals. I'll see you at breakfast. We have supper at about 8. I'm going out after lunch. We had a quick breakfast. The supper David cooked was excellent. The supper David cooked, वो supper जो कि David ने बनाया था, was excellent. The meal was very nice. We'll need an evening meal. अब ये मैंने जो सेक्शन है ना सी डी ई और एफ, ये मैंने रीड आउट इसलिए आपको कर दिए हैं क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग ही तंग पड़ जाएंगे. सो मैंने ऑलरेडी आपको इसके रूल्स जो हैं वो बता दिए हैं. So let's do the exercises related to Unit 88. Exercise 1 and 2 are your homework, and we are going to do exercise number 3 together. So this exercise is basically based on the A to F sections on Friday for lunch, etc. Put in the words, decide if you need to use the. Claire: hello, Henry, come in. Henry: oh, sorry, you are having lunch. Claire: no, this is breakfast. दिस इज ब्रेकफास्ट, ये तो नाश्ता है. खास नाश्ते के बारे में बात नहीं हो रही, बस नाश्ता है, इसीलिए उससे पहले द नहीं लगेगा. आई हैड अ लेट नाइट. मैं काफी देर से रात को घर आई. इट वॉज लॉन्ग आफ्टर मिड नाइट वेन आई गॉट इन. सो आधी रात से ज्यादा का वक्त था जब मैं अंदर आई. अब लॉन्ग आफ्टर मिड नाइट, नाउ शी इज नॉट रिफरिंग टू एनी स्पेसिफिक मिड नाइट, सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज सिंपली मिड नाइट. सो ब्रेकफास्ट और मिड नाइट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. Henry: someone told me you are going away after Christmas. Here again, Christmas simply use होगा. Claire: yes, I am going to the Seychelles on Wednesday. So again, Wednesday से पहले कोई article नहीं लगेगा. Henry: what a life you lead, Claire. What time do you leave for the airport? Claire: oh, in the morning, sometime. The morning यानी कि अगली ही सुबह जा रही हूँ.
और किसी भी वक्त about 10. It's cheaper to fly at night. अब इधर जो है मॉर्निंग से पहले द लगेगा और नाइट सिंपली एज इट इज आ जाएगा. बट आई डिसाइडेड इट वुड बी इजियर ड्यूरिंग द डे. यहाँ पर डे से पहले द लगेगा. I can drive you to the airport. I'm usually free on Wednesday. Here again, we are not going to use any article before Wednesday. Wednesday mornings. I'd like to see you off. Claire, that's sweet of you, Henry, but I can take a taxi. Henry, I'll just check in my diary that it isn't the Wednesday of our next board meeting. मैं ज़रा अपनी डायरी में चेक कर लूँ कि ये वही वाला वेंसडे तो नहीं है जिस पर बोर्ड मीटिंग है. अब ये वही वाला वेंसडे मीन्स इट इज रिफरिंग टू सम स्पेसिफिक वेंसडे. दैट इज व्हाई द इज यूज्ड हियर बिफोर द वेंसडे. सो 9 में आप लगाएंगे द वेंसडे. नो इट्स ओके, आई कैन डू इट. एंड व्हेन विल यू बी बैक? Claire, at the beginning of February, the 2nd, I think. फेब्रवरी के शुरू में मैं आऊंगी वापस. द सेकेंड, अब वो तारीख से पहले द लगा रही है यानी कि फेब्रवरी की दूसरी तारीख से पहले. So students, we are done with our unit 87 and 88. I skipped unit 85 and 86. So we are going to cover that inshallah in our next lecture, the lecture right after this one. So I hope that you have understood all the points that I made during this lecture. As a reminder, I have added the homework here, Unit 87, exercise number 3, and Unit 88, exercise 1 and 2. So we are done for our lecture today. Take care. The lecture has formally ended. Allah Hafiz.